हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम एट एजुकेशन। सो आई होप सो कि आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा शानदार गया होगा, क्योंकि हमने पूरी प्रिपरेशन के साथ में पेपर को दिया था। एंड जो क्वेश्चंस हमने इंपॉर्टेंट में रखे थे, जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, पीवाईक्यूज में किए थे, सेम क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिले होंगे। तो फिर भी चलिए एक बार हम आंसर्स की बनाने का ट्राई करते हैं और चेक करते हैं कि आपका पेपर कैसा गया होगा। So this is page number 1. General information are given here. So first क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। So which one of the following is a post competition responsibility of the technical committee? And this is one disclaimer from my side. We prepare this MCQ on our basis, and there will be some changes will be there. The possibilities are there, and we have to still wait for the official answer key that is provided by the board. So which one of the following is a post-competition responsibility of the technical committee? So the main thing is post-competition. So requisition arrangement of official are the pre-part. So post means after the competition, that is maintenance of the field. So option D is the correct here. Option D. Next one. Which of the following is an objective of intramural tournament? So there's four option. Highest level of the tournament, that is of extramural. Objective, feeling of integration with other institute, so directly we can say that this is extramural. Provide opportunities, career, so career is a part of the extramural. So health and recreation at the institution, the same institution. So option number D is the correct one. Which of the following is deformity is not related to the lower extremities? Knock knees, bow legs, flat foot are in the lower body. Only scoliosis is on the upper body. So option number B is the correct one. Question number 4. Brisk walk, running, bicycling and jumping are related to which activities? See, we have the four options: speed activities, endurance, strength activities and the coordinative activities. So out of that, we can say that the many students are confused between speed activities and endurance activity. So walking, brisk walking, so means fast running, running, bicycling. So these all are the part of the endurance activity, because in bicycling, jumping, we are doing for the longer period of time. So whenever the longer period of time is attached, so we can say option number C is the correct one. Next one is as per the prescribed syllabus, the syllabus that is given by the CBSE, सूर्य भेदन प्राणायाम is recommended for. So इसके लिए आपको याद होगा, एक हमने अलग से वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने ट्रिक के थ्रू याद किया था। ओबेसिटी के लिए आपने अगर आपने देखा होगा, हमारे पास में वहां पे ट्रिक थी पापा साधु। सो पी ए साधु। सो पश्चिमोत्तासन, पौनमुक्तासन एंड जो फर्स्ट एस हमारे पास में था, दैट इज फॉर सूर्य भेदन प्राणायाम एंड दिस इज फॉर ओबेसिटी। तो सूर्य भेदन प्राणायाम इज फॉर दी obesity. So option number A is correct. Question number 6. Identify the asanas. So this one is धनुरासन। इसमें हम क्या बन रहे हैं? बॉ पॉज बन रहा है। लाइक इसको अगर आप देखेंगे, एक कैसा पोज है? धनुष की तरह। सो जब कोई आसन हम धनुष की तरह, किसकी तरह करेंगे? धनुष की तरह। सो उसको बोलेंगे धनुरासन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। एंड इफ क्वेश्चन इज दैट इज विजुअली इम्पेयर्ड, सो इसका अगर हम आंसर फाइंड आउट करेंगे, सो अबाउट द पश्चिमोत्तासन, सो क्या करेंगे? हम बैठ के जब एक्सटेंशन पोजीशन में जाएंगे, सो फॉरवर्ड बेंडिंग इन द सिटिंग पोजीशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 7. सो many students are confused in this question. So question is about the IPC has developed classification process which can contribute to sporting excellence of all athletes and sports in the Paralympic movement and provide equitable competition is absolutely correct. This is true statement that IPC is developed the classification process. We know that in divisioning method is associated with Special Olympic and the classification process is associated with the IPC. और इसमें क्या करेंगे? इसमें जो रोल होंगे क्या होंगे कि एलिजिबल्स को फाइंड आउट करना, दूसरा ग्रुपिंग सिस्टम बनाना. So this one is true, this one is true, and this is the correct explanation of it. So according to me,
ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारे पास में एक बेसिक सा एक ट्रिक यहाँ पे था। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्या होगा कि हमारे पास में जो चार ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप यहाँ पे इसको ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ब्लैक हमारा पार्ट नहीं होता, ब्लैक डेफलिम्पिक्स का पार्ट नहीं होता, नहीं होगा। सो यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है। सो मीन्स तीन ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। What type of lever has the load resistance between the fulcrum and the force? वो कौन सा लीवर होगा जहां पे क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द फोर्स, कि जो हमारे पास में जो लोड होगा वो कहां पे आएगा, इन सेंटर, वन साइड इज फल्क्रम एंड वन साइड इज अफर्ट। सो दिस कंडीशन इज ऑफ द सेकेंड क्लास लीवर। So suppose करिए कि this is your toe, this is your body weight and this is your upper body. So when you are doing the push up, same application is working. So option B is the correct, second class lever. Question number 10. The scientific name of vitamin C is ascorbic acid. Question number 11. Again, assertion region question. The risk of cancer can be reduced by eating more colorful vegetables. This statement is true. Fruit and the other plants food that have the certain phytochemicals in them. So statement is true, means second one, non-nutritive component of diet are the part of balanced diet. This statement is also correct, but it's not linked by each other. So option number B is the correct one. This according to us, and we have to still wait for the official answer key that is provided by the CBSE. Question number 12. The most interesting question of this paper or for the today paper, in which test score is recorded to the nearest centimeter between the initial and the final score. Many students are confused in that. So according to me, the right answer is sit and this test, जहां पे हम क्या करते हैं, जो sit and this box हम करेंगे। सो हमारे पास में स्केल होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, यहां से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और नियरेस्ट इनिशियल और फाइनल स्कोर के बीच में हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर्स काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मैच द फॉलोइंग, दैट इज about the from the chapter number 7, physiology and injuries. So this is about the fractures. So we have the transverse, oblique, green streak, communicated. So इसके लिए बेसिकली आप कैसे याद कर सकते हो, लाइक जो कम्युनिकेटेड होता है, हम क्या करते हैं, बहुत लोगों में बातचीत करते हैं, लोगों से अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, मल्टीपल। सो व्हेन द ब्रेक इज क्रश इनटू नंबर ऑफ पीसेस, सो ऑप्शन नंबर 2। सो डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 कहां पे, यहाँ पे। सो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और ऑब्लिक डायगनली, ग्रीन स्टिक जो क्या होगा, बोन हमारे पास में बैंड हो जाती है, सॉफ्ट बोन विच बोन बैंड। सो लाइक दैट यू कैन डू। द गोल्फ बॉल रिमेन एट रेस्ट। सो जहां पे भी आएगा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बॉडी हमेशा किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, तो उसको हम किस तरह से करेंगे। सो द आंसर ऑफ दैट वन, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ motion. Question number 15 from chapter number 9. So we have this, some traits are given of big five and in front of the characteristics are there. So how we do? See, openness. So openness means the person is creative, focused on tackling new challenges. Agreeableness means friendly, helpful, and trustworthy. Extrovert means highly active, optimistic and social. Neuroticism means insecure, nervous and the anxious. So हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी, ऑप्शन नंबर सी means insecure. Openness means creative, focus. Extroversion, this one. Agreeableness, this one. So A is third. So यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास में देखिए, दो एलिमिनेट हो गए, कौन से A और B बचा। एक्सट्रोवर्जन का फर्स्ट, अगेन दिस वन। न्यूरोटिज्म इट्स सेकंड, सो सी का हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेकंड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 16। द कंसेप्ट ऑफ स्पेस जनरली रेफर्स टू अ पर्सन एवोल्यूशन और एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम और हरसेल्फ, कि खुद से कैसा एटीट्यूड हम रखते हैं, ये कैसे पता चलेगा, वो हमारा होता है सेल्फ एस्टीम, की हम खुद के बारे में
क्या सोचते हैं कि हमारा खुद के बारे में क्या गोल होगा. So this is known as the self-esteem. Option number B is the correct one. Swedish word speed play is also known as the fartlek method. Many times we do in 5 mark, 3 mark question. The fartlek method is developed by the Gosta Holman. This is also known as the Swedish play method or speed play. Many students are confused with the word speed play. In which type of exercise movements not be seen directly? So in isokinetic machines are there, so we can easily identify. Isotonic is also visible, like when we are going for gym, our muscles are torn up. So in gym, we are doing the activities with the dumbbell. So dumbbell machinery, rods and all. So आप वहाँ पे clearly movements क्या होंगे visible होंगे. So the correct answer is isometric. Iso means same, metric means length is not change. क्वेश्चन नंबर 18 करेक्टिव मेथड्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे. आप बैटरी में मेंशन कर सकते हैं गोल एक्स के लिए, राउंड शोल्डर्स के लिए कौन से वहां पे हो सकते हैं. Enlist for benefits of participating in physical activities for children with special needs. So any for benefit like physical benefit, social benefit, psychological benefits, you can write it down. Invite any two myths related to food items like कि हमें ज्यादा बनानास नहीं खाने चाहिए या एग बनाना एक साथ में नहीं खाने चाहिए. If we eat uh, more carbohydrate, more potatoes, then we are become the fatty and all. So these are the some food myth. So you can easily write it down. And this question is, I say this is very important question many times. Last from 10 years, I see this question is asked Harvard step test. So in this, you can write any formula, short-term formula or the long-term formula. Or the formula that yesterday class we also discussed, 100 into test duration in second upon 5.5 into pulse count. Last year this question asked in 3 marks. This year's question is asked 2 marks. So this time you have to just write it down the fitness index. Mention two strategies for enhance adherence to exercise. कि आप एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सरसाइज को फॉलो करने के लिए, एडवेंस का मीनिंग होता है निष्ठा, कि आप किस निष्ठा के साथ में एक्सरसाइज करेंगे, ये एक्सरसाइज हमें क्यों करनी चाहिए या आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है. सो उसके लिए आप कौन सी स्ट्रेटेजी आप वहां पे बनाएंगे. Question number 24. When the wrestlers fall on the mat, when they spread their arm, knee and leg, justify your answer. So basically it's about the equilibrium question, stability. कि जो wrestler होगा, जो fight करेगा, so अपने पैर को, बॉडी को थोड़ा सा नीचे लेके रखता है रीजन to increase the stability, to increase the equilibrium. So this is about the equilibrium and stability. To increase the stability, the wrestler is doing this thing. Question number 25, the organization. So run for specific cause, run for unity. So this is ऐसे टाइप क्वेश्चन, you can easily write it down कि run for specific cause हमें क्यों करना चाहिए, run for unity क्यों होती है, to spread the specific awareness about the topic, to increase the people about the health and all. Physical and psychological benefit. Definitely, if the woman play any game, so there will be lots of advantage like उनकी physique अच्छा होगा, उनकी mental health अच्छी होगी, उनकी bonds strong होंगे, psychologically और society में अच्छा कर सकती है. So these are the some benefits, physical and the psychological one. Define flexibility methods. So define flexibility. So what is flexibility? Flexibility is the range of moments. Yesterday जो हमने PYQs अपलोड की थी वहां पे हमने डिस्कस किया था. Methods, you know this ballistic method, PNF method, stretch and hold method, stretch method are the method to develop the flexibility. Three importance of diet during competition. So mainly at the time of during competition, the player or sport person will take the more food in the form of the liquid because it will helps to hydrate their body, get the instant energy. So like that you can write it down. 21. Residual volume. So that energy or the air that we take in. So उसके बाद में जो हमारे पास में जो एयर का जो वॉल्यूम बचता है आफ्टर एक्सेल, this is known as the residual volume. And stroke volume in one beat, the amount of blood pump in one beat is known as the stroke volume. Hostel and instrumental aggression.
Hostile aggression is also known as the reactive aggression. Instrumental means channel. In hostile, we harm the another player or the player will harm another. And instrumental aggression is channeled into the good form of energy. Now move to the section D, important question. This time, last year also the question is asked from the knockout, and this time also the question is asked from the knockout tournament. This time, but the level of this question is very low. For the number of non-biased team in the tournament, suppose यहाँ पे clearly यहाँ पे mention किया हुआ है total number of teams are 11. So out of 11, 5 teams are by 1, 2, 3, 4, 5. So the remaining one, so you can easily count 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 is the correct answer. It's just like the KZ class question. If the above fixture had been 48 teams, the number of byes would have been. So यहाँ से नहीं होगा. अब हम कैसे find out करेंगे? We know that the formula of 2 power n minus n. So 2 power n कितना होगा? Like 2, 4, 8, 16, 32, 64. 2, 4, 8, 16, 32, 64. So 48 क्या होगा? Is higher than 32. So what we do? 64 minus 48. So this is your answer. Next one is seventh match will be played between team number. So यहाँ पे आपको directly count करना. This is match number 1, match 2, match 3, match 4, match 5, match 6. So match number 7 is played between team 10 and the team 11. 10 and 11. This is the answer. Write the formula to calculate number of byes in lower half. So for what the formula? Number of byes minus plus 1 divided by 2 if the lower half, and this condition of the odd. If the even, the number of byes divided by 2. The provision which good teams are placed in different half or pool based on the ranking of the previous year. So जब हम previous year की बारे में बात करेंगे और teams को oppositely place करेंगे, so this means we talking about the seeding method. This is for visually impaired. How many matches will be played in the tournament? 17 teams are there. The formula is n minus 1 means 16. Save scores, time, and save scores and time and make each match intensive because of fear of elimination. So knockout tournament is also known as the elimination tournament. Two teams player got injured during the match. Which team will manage this? That is logistic team, because the medical team, the first aid team is the part of the logistic one. What the formula used to allot bias to the above team in the lower half? The formula we already discussed. For the lower half, that is number of byes plus 1 divided by 2, and for the upper half, number of byes minus 1 divided by 2. For the odd condition and condition of odd, number of byes divided by 2. Okay, question number 32. This is about the Paralympic, Deaflympic and the Special Olympic. To participate in Special Olympic, minimum age should be. First Deaflympic was held in the year 1924. Founder of Paralympic, Sir or Dr. Ludwig Guttmann. Write any two strategies to make physical activities accessible for special children. This question is very important. हमने बहुत बार डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हार्वर्ड सेटर्स की तरह काफी ईयर से ये आपको फॉलो करते हुए आ रहे हैं. सो environment, you can write it down. Medical checkup, infrastructure, and like that you can write it down. Which is not long-term effect of exercise on the muscular system. So hypertrophy of muscles, long-term effect. Increase glycogen store, long-term effect. Ligament and tendon strengthen, long-term effect. Accumulation of lactate, this is short-term effect. बिकॉज जब कोई वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा, उसी टाइम होगा, इसीलिए आपकी बॉडी क्या होती है, थकान फील करती है, फटीग फील करती है. सो दिस इज द फॉर शॉर्ट टर्म इफेक्ट. सो ऑप्शन नंबर डी. What is cardiac output? So you can directly write it down the formula. The cardiac output is equal to heart rate into stroke volume.
It means the amount of blood pumped in 1 minute from each ventricle is known as the cardiac output. What is tidal volume? The amount of air inhaled in one breath. लैक्टिक एसिड टॉलरेंस लेड टू दी एंड्योरेंस, क्योंकि एंड्योरेंस कोई एक्टिविटी आप करते हैं, सो इट डिपेंड ऑन कि वो एक्टिविटी आप कब तक परफॉर्म करेंगे, जब तक लैक्टिक एसिड आपका आप टॉलरेट कैपेसिटी वहां तक आप पहुंच नहीं जाएंगे. मंडूकासन, frog pose. This is section number E. In this you have to attempt any three questions. Okay, out of 5 you have to attempt any 3. So Mandukasana is known as the frog pose. Makrasana is known as the crocodile pose. This asana we perform in the prawn position. Mandukasana in sitting position, and this is the extension of the Vajrasana. This one is the extension of the Vajrasana, like that. So this is the asana for the frog pose. Makrasana is like that. Makrasana is like your hands on your chin. What do you mean by equilibrium? Equilibrium means balance. When the net force acting on a body is become the zero is known as the equilibrium. So explain how equilibrium increases with influence of various factors by giving suitable example from sports. So you can write it down like that. Ki suppose the center of gravity point is higher, then less stability. So just like in volleyball, the player is bent himself to gain the stability, to gain the equilibrium. If the base of an object is big, so more stability. इसीलिए अगर आप सपोज करिए कि हमारे पास में दो तरह की पर्सन है, एक बहुत फैटी पर्सन ओबेस पर्सन है और एक थोड़ा सा स्लिम पर्सन है. सो द पर्सन हैविंग द मोर मास, द पर्सन हैविंग द ओबेस बॉडी, द पर्सन हैविंग द मोर स्टेबिलिटी, उसको उठाना आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा. वहीं पे अगर कोई पतला इंसान होगा आप इसको इजीली पुश अप कर सकते हैं, बिकॉज ड्यू टू द लेस equilibrium, less stability. So these are the some factors. सर्किट ट्रेनिंग इज लाइक दैट कि यहाँ पे हमने अलग अलग स्टेशन हमने बनाए. सो इन एवरी स्टेशन हम क्या करें, हमने कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज किया. लाइक पुशअप हमने यहाँ पे किया, पुलअप हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने हाई नी किया, यहाँ पे हमने माउंटेन एक्सरसाइज किया, यहाँ पे हमने जंपिंग जैक्स किया, और यहाँ पे हमने मॉडिफाइड पुशअप या पार्शियल कर्ल किया. सो लाइक दैट कि आपने हर स्टेशन पे क्या किया, अलग अलग एक्सरसाइज को परफॉर्म किया. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लाइक दैट और द मेन बेनिफिट ऑफ दिस कि फ्रॉम help of circuit training, suppose in a station we have the 10%, so you can easily engage 60% at a time or in a small place. In circuit training we require this small place, and you can conclude and you can like कि हम उनको engage कर सकते, we engage the more person at the same time. That's why this is the advantage of the circuit training. Last one is the Flamingo balance test. The purpose of the Flamingo balance test is to find out the static balance of a person, and the plate tapping to check the upper body coordination, the speed movement. So this is the complete analysis of the paper. I hope so your paper is good, and you have to still wait for the official answer key that is provided by the CBSE. In some question it may be the chances that in some question or answer that will be changed, like in assessment region question. So थैंक यू सो मच. एंड आपने जो सपोर्ट किया, आपने जो हमें प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे साथ में जुड़े रहिए. इसी तरह हम ट्राई करेंगे हर साल कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे से अच्छे सीरीज आपको प्रोवाइड की जाए. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन.